Kargil War. It was codenamed Operation Safed Sagar. The IAF acted jointly with the Army's ground troops to flush out infiltrators. Swift and decisive use of air power by the Indian Air Force without crossing the border allowed the Indian Air Force to interdict enemy communication lines and flush out the intruders, thus allowing the Indian Army to reclaim occupied territory. The gallant action by the Indian Air Force, along with the extremely well orchestrated missions, allowed the Indian Air Force to dominate the skies over Kargil and not allow the Pakistan armed forces to change the perception of the border in the international community. This was the first operation where the women air warriors fought shoulder to shoulder with their male counterparts. Flight Lieutenants Gunjan Saxena and Sri Vidya Rajan flew helicopters during the operation and paved the way for the Indian Air Force to induct more women officers. In addition to the deadly bombing and strafing raids, the IAF also undertook close support missions, logistical supply, and casualty evacuation, along with the Army aviation units. Three officers and two airmen made the ultimate sacrifice. For its role in the operation, the Indian Air Force received two Veer Chakras and 23 Vayu Sena medals. After Operation Safed Sagar in 1999, the Indian Air Force took the roadmap to acquire cutting edge technology with niche capabilities by inducting Sukhoi 30 MKI, precision guided munitions, force multipliers like the AWACS and IACCS. The years after Kargil saw the IAF transforming itself into a truly world class air force with niche strategic capabilities. These inductions have transformed the Indian Air Force into a truly world class air force, which has been demonstrated time and again by the Indian Air Force's performance in various international exercises against the leading air forces of the world. In the aftermath of Pulwama
precision air to ground weapons. These steps will surely alter the direction in which we as a country will progress in the coming years. India, a country which taught the world the basics of mathematics, and a country which demonstrated fathoms of depth in various facets of technology. In order to realize our true potential, to bolster and boost our economy, and also to empower our youth, India embarked on a new journey. Make in India. Make in India is a major national program of the people of India, designed to facilitate investment, foster innovation, enhance skill development, and build best in class manufacturing infrastructure in the country. The defense procurement procedure acts as a vital pillar for realizing the vision behind Make in India initiative. It encourages fostering indigenous capabilities through design and development of required defense equipment by both public and private sector organizations in a faster time frame. Now we see a new India in the making, an emerging global superpower. We, the Indian Air Force, are quick to adapt to the change and are putting a strong foot forward. Let us give you all just a glimpse of our present initiatives. HTT 40. HTT 40 is the basic trainer aircraft indigenously built to hone the budding pilots of the Indian Air Force. The HTT 40 is a tandem seat aircraft featuring a fully glass cockpit with night flying capability. LCA Tejas. Tejas is a single engine, lightweight, high agility supersonic fighter aircraft. The aircraft's design and development program was led by the Aeronautical Development Agency of the Indian Department of Defense, with Hindustan Aeronautics Limited as the prime industrial contractor. The aircraft can be armed with
Ladies and gentlemen, on behalf of the Indian Air Force, we now welcome the viewers of Doordarshan in India and abroad for the live telecast of Firepower Demonstration Exercise Vayu Shakti 2024. भारतीय वायुसेना द्वारा किए जाने वाले इस युद्ध कला प्रदर्शन वायु शक्ति 2024 का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की ओर से हम अपने देश एवं विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। Also gracing today's occasion are senior officials from the central and state government and armed forces, military attaches from friendly foreign countries, distinguished guests from the state of Rajasthan, and members of the media who are here in strength to capture and transmit this display live to all our viewers back home. The helicopter with our chief guest on board, Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Param Vishish Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Sena Medal, Vishish Seva Medal, which had taken off from Air Force Station Jaisalmer, has reached Pokhran range. आप अपनी बाईं ओर देखिए, हमारे आज के मुख्य अतिथि को लेकर जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर से उड़ा था, अब पोखरण रेंज पर लैंड कर चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ वर्दीधारी सैन्य सलाहकार हैं। Over the years, the Indian Air Force has been attuned to emerging technologies and has imbibed best practices from across the world. We have modernized our arsenal and adopted technology to deploy, fight, and win full spectrum warfare, always and every time. The Indian Air Force believes in transforming itself to keep up with the times and the dynamic environment, which is the key to asserting its position in the global scenario as a potent and lethal force. संध्या की सूर्य किरणें राजस्थान की इस धरती संध्या की सूर्य किरणें राजस्थान की इस धरती पर पड़कर वातावरण को और भी मनोरम बना रही है। यह निश्चय ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मुख्य अतिथि भारत के सीडीएस हैं। Once the chief guest reaches the dais of the grandstand, national anthem will be played and we will witness three Chetak helicopters carrying the national flag and the Air Force ensign fly past the grandstand. राष्ट्र भावना से ओतप्रोत आज का यह स्थान इस बात को भी दर्शा रहा है कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के लिए देश और देश का गौरव ही सर्वोपरि है और देश के गौरव की रक्षा के लिए सदियों से भारत के कोने कोने से रणबांकुरों ने आकर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। राष्ट्र के गौरव और सम्मान के लिए भारतीय वायुसेना ने हर मौके पर अपनी सार्थकता सिद्ध की है और इसी का प्रदर्शन आज राजस्थान की इस पावन और ऐतिहासिक भूमि पर होने जा रहा है। And now the chief guest is moving towards the grandstand. Very soon we will have amongst us Chief of Defence Staff General Anil Chauhan. Chief of Defence Staff is the highest ranking uniformed officer on active duty in the Indian military and Chief Military Advisor to the government. He is the permanent chairman of the Chiefs of Staff Committee and also heads the Department of Military Affairs in the Ministry of Defence. General Anil Chauhan is an alumnus of the National Defence Academy and is a graduate of Defence Service Staff College, Wellington, the Higher Command and National Defence College courses. He was commissioned in June 1981 and assumed the appointment of the Chief of Defence Staff on 30th September 2022. The position of CDS was created with the aim of enhancing jointness among three services, ensuring tri-service effectiveness and overall integration of the combat capabilities of the Indian Armed Forces. He will be received by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, and Air Officer Commanding in Chief, Southwestern Air Command,
Air Marshal Narmdeshwar Tiwari. Ladies and gentlemen, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan has arrived at the grandstand. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमस्कार, आदर, अभिनंदन। वायु शक्ति 2024 के अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। देश विदेश से आए हुए मुख्य अतिथियों एवं भारत के नागरिकों के समक्ष इस अद्भुत रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए हमें अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। प्रत्येक 3 वर्ष में किए जाने वाले इस प्रदर्शन द्वारा भारतीय वायुसेना अपने सभी युद्धक अभियानों एवं कार्यवाहियों का प्रदर्शन करती है। Mission, integrity, and excellence. These are the core values of the Indian Air Force. To demonstrate its ability to provide decisive aerospace power in furtherance of our national interest, we are honored and proud to present Vayu Shakti 2024 at the Pokhran air-to-ground range. This exercise would showcase our firepower, operational preparedness, and training status. Aerospace power is synonymous with offensive lethality, reach, and responsiveness. To showcase some of the unique characteristics of air power, today's demonstration will feature a number of aircraft and ground-based weapon systems carrying out coordinated missions to achieve concentration of force and to project decisive firepower. I now request Air Officer Commanding in Chief, Southwestern Air Command, Air Marshal Narmdeshwar Tiwari, to take permission from our Chief Guest for commencing exercise Vayu Shakti 2024.
माननीय अतिथिगण, हवाई प्रहार अपनी पहुंच, सटीकता और तीव्रता के लिए प्रख्यात है। इन विशेषताओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते अब एक रफाल विमान आपके दाएं से बाएं और आवाज की गति से भी तीव्र गुजरेगा। Look out for Rafale coming from your right, 2 o'clock low, and raise your hands when you spot it. क्या आप देख सकते हैं रफाल विमान को? अगर देख सकते हैं तो एक हाथ उठाइए और नहीं देख सकते तो दोनों हाथ उठाइए। And here comes the Rafale. More left. Left. And that was the supersonic boom. The boom is created whenever an aircraft flies faster than the speed of sound. अगर आप में से कोई भी अपनी कुर्सी से गिर गया है तो कृपया वापस बैठ जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आपने देखा कि रफाल विमान 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। वह अपनी ही ध्वनि से पहले आप तक पहुंचा और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह बिना ही किसी आवाज के उड़ रहा हो। विमान के सामने से गुजरने के पश्चात आपने एक जोरदार धमाका सुना और तैयार हो जाइए और कई धमाकों के लिए वायु शक्ति 2024 की आज की प्रस्तुति में। Good intelligence on enemy disposition is vital for decision-making process and understanding the operational environment. The Jaguar aircraft, equipped with day and night capable recce reconnaissance pod, is one of the enablers with the Indian Air Force to image the areas inside enemy territory. Flying at 300 feet at high speed, Sanjay formation of 2 Jaguars equipped with recce imaging pod will be approaching the grandstand from your frontal quarters. Jaguar would be photographing the viewing gallery and transmitting it in real time to a ground station. दर्शकों, जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर तेज गति से उड़ान भरती 2 जैगुआर की संजय फॉर्मेशन को आप थोड़ी देर में आपके सामने से आते हुए देख पाएंगे। Look straight ahead, low. Here come the Jaguars, one trailing the other. The Jaguars will photograph the grandstand now. Like Jaguar, Sukhoi 30 and RPAs in the Indian Air Force also undertake the battlefield imaging task. कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले विंग कमांडर राघव बगई, जो कि एक अनुभवी लड़ाकू विमान पायलट हैं, आप सबको लक्ष्य के बारे में जानकारी दें। जय हिंद श्रीमान, मैं विंग कमांडर राघव बगई आज आपके समक्ष वायु शक्ति 2024 का टारगेट लेआउट ब्रीफिंग प्रस्तुत करूंगा। इस वर्ष वायु शक्ति 2024 का थीम है नभस वज्र प्रहारम, अर्थात आसमान से बिजली का प्रहार। मेरी इस ब्रीफिंग में मैं आपको बाएं से दाएं ले जाते हुए टारगेट एरिया का परिचय कराऊंगा। जहां पर आप अभी विराजमान है, इसे कहते हैं ग्रैंड स्टैंड। हमारा टारगेट एरिया ग्रैंड स्टैंड से 10 o'clock से लेकर 2 o'clock 1 से 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रैंड स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पर है एक हवाई पट्टी, जिसे कहते हैं ALS यानी एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप। इसका ओरिएंटेशन है 0523। आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकेंगे टारगेट लेआउट और टारगेट एरिया में एक छोटे विस्फोट तथा सफेद धुएं से टारगेट को दर्शाया जाएगा। दुश्मन के इलाके में ये टारगेट दूरी पर फैले होंगे, लेकिन आज के प्रदर्शन के लिए और आपके बेहतर दृश्य के लिए ये हमने टारगेट नजदीक सिमुलेट किए हैं। बाएं से शुरू करते हुए हमारा आज का पहला टारगेट नंबर 10, जो ग्रैंड स्टैंड से 10 o'clock 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये टारगेट दुश्मन का POL डंप यानी पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स भंडार दर्शाता है। अगला टारगेट उसी दिशा में आपसे दूर है, टारगेट नंबर 11,
जो दुश्मन का एक टैंक कॉन्वॉय यानी टैंकों का काफिला है। अगला टारगेट आपसे 11 o'clock 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। टारगेट नंबर 6 जो दुश्मन का एक टैंक कॉन्वॉय यानी टैंकों का काफिला है। उस दिशा में कुछ दूर और आपसे दूर है टारगेट नंबर 13 जो दुश्मन का एक महत्वपूर्ण ब्रिज यानी कि पुल है। उसी दिशा में आपसे दूर हल्का सा दाएं है टारगेट नंबर 4 जो दुश्मन का एक C2 सेंटर यानी कमान और नियंत्रण केंद्र है। आपका अगला टारगेट उसके दाएं 11:30 3 किलोमीटर पर है टारगेट नंबर 8 जो दुश्मन का रनवे यानी कि हवाई पट्टी है। उसी दिशा में और करीब है टारगेट नंबर 12 जो दुश्मन का एक लॉजिस्टिक्स नोड यानी रसद केंद्र है। उसके और करीब है टारगेट नंबर 14 जो दुश्मन का एक टैंकों का काफिला है। आपसे 11:30 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है टारगेट नंबर 16 जो दुश्मन का एक रडार क्षेत्र है। आपके ठीक 12 o'clock 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है टारगेट नंबर 15 जो दुश्मन का एक फॉरवर्ड एरिया रीआर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग पॉइंट है। उसी दिशा में आपसे दूर है टारगेट नंबर 5 जो दुश्मन का एक ऑपरेशंस रूम है। उस दिशा में हल्का सा दाएं आपसे दूर है टारगेट नंबर 2 जो दुश्मन का टेररिस्ट यानी कि आतंकी कैंप है। अगला टारगेट आपके 1 o'clock 3 किलोमीटर पर है टारगेट नंबर 1 जो दुश्मन का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आयुध कारखाना है। उसी दिशा में आपसे नजदीक हल्का सा दाएं है टारगेट नंबर 3 जो दुश्मन सैनिकों का कंसंट्रेशन एरिया है। उसी दिशा में आपके और नजदीक है टारगेट नंबर 9 जो दुश्मन का व्हीकल कॉन्वॉय यानी वाहनों का काफिला है। और हमारे आज का आखिरी टारगेट है टारगेट नंबर 7 जो आपसे 2 o'clock 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दुश्मन का गोला बारूद भंडार दर्शाता है। इसके अलावा आपके 12 o'clock 2 किलोमीटर पे हमने तैयार किया है एक ड्रॉप जोन। इस ड्रॉप जोन की लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। इस पर आप अनुभव करेंगे आज हमारे C-17 ग्लोब मास्टर को हेवी कंटेनर ड्रॉप करते हुए। जय हिंद श्रीमान, मेरी ब्रीफिंग समाप्त हुई। And coming up now, the most awaited first lightning strike from the sky by deep penetration strike aircraft Jaguar. Having received intelligence from the images taken, Karna formation with 2 Jaguar has been tasked to carry out a high-speed, low-level attack from your right on ammunition depots simulated by target number 11 located at your left 11 o'clock with 6,000-pounder bombs fitted with retarder tail units. Retarder tail units have parachutes fitted at the rear of the bomb, which delay the weapon's fall and explosion. And you will see these parachutes after weapon release. Fighters will also dispense flares to deceive enemy anti-aircraft weapon system. It will also help you in spotting our aircraft. Now, look to your right, 2 o'clock low. The Jaguars are approaching the ammunition depot. You can see the flares. Wait for the bomb release. Bombs dropped. You can see the parachutes. Bombs have impacted. A perceptible delay as delay fuse have been activated. And the explosions. The enemy arsenal is completely destroyed. सामने स्क्रीन पर हमले की वह तस्वीरें आप देख सकते हैं जिन्हें बैटल डैमेज असेसमेंट भी कहा जाता है। आरपीए दुश्मन के इलाके से लगातार यह तस्वीरें कमांडर की समीक्षा के लिए भेज रहा है। और अब अगले मिशन के लिए आपके बाई ओर से आ रही है मिराज 2000 की पृथ्वी फॉर्मेशन, जो हमला करेगी 16-250 किलो के बम के साथ एक आतंकी ठिकाने पर जो आपके दाहिनी ओर है। Look to your left, 10 o'clock high.
Two Mirage 2000 are approaching the terrorist camp. दुश्मन की ताबूत में कील ठोकने के लिए बढ़ते हुए हमारे जंगी जहाज. इंतजार कीजिए वेपन रिलीज का. You can see the flash. और बम गिरा दिए गए हैं. टेररिस्ट कैंप को तबाह कर दिया गया है. समस्या कितनी भी गंभीर हो, परंतु भारतीय वायुसेना के पास हर समस्या का समाधान है. हमारा अगला प्रहार होगा सुखोई 30 MKI कॉल साइन अशोक के द्वारा इस क्षेत्र में दुश्मन के पुल को निशाना बनाना. इस हमले का उद्देश्य शत्रु के परिवहन नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट करना है. Information has been received that the enemy army is mobilizing its strategic reserves into the tactical battle area. The mighty flanker Sukhoi 30 MKI, call sign Ashok, is now planned to target a vital road bridge which these forces are going to use to reach the battlefield. The target is located at your left 11 o'clock and the Sukhois will fly in from your right. The Sukhoi 30 MKI is a twin-engine, multi-role air dominance fighter developed by Russia and built under license by Hindustan Aeronautics Limited. From your right, 2 o'clock high, two Sukhois are approaching the arena to display their ground attack capabilities. They're dispensing flares to grab your attention. Both the Sukhois have released their load, and with that, a total of 10,000 pounder bombs have been dropped towards the target. Watch the bombs fall, moving towards the target for a definite obliteration. And the explosions. With that, the enemy bridge is damaged. Next, we present to you a simulated but nevertheless a very real sequence of air-to-air combat. Air superiority fighter Rafale, call sign Indra, while carrying out combat air patrol, has made contact with an enemy fighter who's attacking our ground forces. He plans to use his Mika missile to shoot down the enemy. The enemy aircraft is being simulated by a remotely piloted drone, a maneuverable expendable aerial target or MEAT. The drone will fly in from your left towards your front at a height of 2,000 feet. ड्रोन से निकलने वाली ऊर्जा दुश्मन के लड़ाकू विमान के हीट सिग्नेचर को दर्शा रही है, जिसे मीका मिसाइल के इंफ्रारेड सीकर हेड द्वारा पहचान लिया जाएगा और इंदिरा कॉल साइन के साथ रफाल विमान ड्रोन को खत्म करके अपनी एयर डिफेंस क्षमता का प्रमाण देगा. Keep looking towards your left and watch out for the Rafale flying into the arena. And here comes the Rafale. Call sign Indra coming in from your left, 9 o'clock. The Rafale will now maneuver into position for launching the Mika. If you look at your 1 o'clock high, you can see the simulated target drone. And the Rafale is dispensing flares. Fire. Are directed. And watch as the Rafale pitches up, dispensing flares as it exits the combat area. The next attack is by our very own light combat aircraft, the Tejas. Call sign Arjun will now be dropping a laser-guided bomb on the enemy command and control center, simulated by target number 4, located on your left, 11 o'clock, 3 kilometers. The target will be illuminated by a laser beam from the Tejas, using which the laser-guided bomb shall steer itself precisely towards the target. This will immediately be followed by one Sukhoi 30 MKI dropping 5,000 pounder bombs, which will further destroy associated targets. Both the aircrafts will be approaching from your left. Tejas flying at a height of 9,000 feet, closely followed by the flanker at 11,000 feet.
The pilot has indicated that the laser-guided bomb has been released. Here comes Tejas from your left, 10 o'clock high, releasing flares. Eyes on target now, 11 o'clock, 3 kilometers. And wait for the impact. The bomb has hit the target. Wait for explosion. Following behind Tejas, the Sukhoi 30 MKI has already dropped its bombs. The 1,000-pounders have also hit the target. और यह एक जोरदार धमाका इस क्षेत्र में अब शत्रु का नेतृत्व समाप्त हो चुका है. The Uday formation of two MiG-29 upgrades shall drop 4 500 kg bombs in order to destroy enemy operations area simulated by target number 5 right 1 o'clock at 2.5 kilometers. कृपया अपनी बाईं ओर देखें. आप दो MiG-29 को एक के बाद एक निशाना लगाते हुए देख सकेंगे. The aircrafts have released the bombs. The aircraft is releasing the flares. Wait for the impact. And the second impact. दुश्मन के क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाकर हमारे MiG-29 तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए. The Chandra formation of two Hawks has been tasked for destroying another ammunition depot. The aircraft are carrying 4 250 kg high-speed low-drag bombs and shall be flying in from your left. हॉक का आकार छोटा होने के बावजूद भी इसकी विध्वंसक क्षमता काफी सराहनीय है. फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन में ट्रेनी पायलट्स को भेजने से पहले 1 वर्ष के लिए हॉक पर प्रशिक्षित किया जाता है. 2008 से इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हॉक विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक श्रेष्ठ निर्णय साबित हुआ है. Please look left, 9 o'clock high, and notice the first Hawk rolling into dive. Bombs away. And there, a roaring explosion. Wait for another impact. और इसके साथ दुश्मन का एमिनेशन डिपो मिट्टी में मिल गया है. Our RPA has detected an enemy vehicle convoy moving vital war equipment to the front line. Launched on an immediate battlefield airstrike or PAS mission, we shall soon be witnessing Nakul formation comprising 2 Hawk aircraft carrying 68mm caliber rockets. This formation is heading for the convoy at target number 9 to your right 1 o'clock at 2 kilometers. Please look to your left, 10 o'clock high. The first Hawk, armed with an armor-piercing rockets, is primed for the kill. The pilot is in dive, ready to release his deadly payload. And here he fires. The second Hawk trailing the leader.
Rockets about to be fired. And with that, the convoy is totally destroyed. Target number 8 to your left, 11 o'clock at 2.5 kilometer is depicting an enemy runway. Two Sukhoi 30 MKI call sign thrown out with 12,000 pound bombs with a delayed fuse will be attacking the runway. The Sukhoi 30 MKI is a two-seater twin-jet multi-role air superiority all-weather long-range fighter. This potent fighter jet is capable of performing long combat missions and carry a versatile array of weapons. अपने दिलों को थाम कर बैठिए दो सुखोई विमान ठीक आपकी बाईं ओर से आ रहे हैं एंड द फ्लेयर्स हैव बीन डिस्पेंस्ड बाय द सुखोई 30 MKI and the Sukhoi 30 diving in. Look up to your left. As you can see, Sukhoi 30 MKI dispensing flares. The bombs have been released. And the second Sukhoi 30 MKI in dive. There you can see right in front of you. The bombs have been dropped and wait to hear the sound of the explosion. और दूसरा बम भी सुखोई 30 MKI गिरा चुका है दुश्मन पर और इसके साथ ही दुश्मन की हवाई पट्टी को नष्ट कर दिया गया है. Having destroyed the enemy's runway, we have ensured that the enemy will not be able to take off anytime soon. So we are now diverting our attention towards a tank convoy, which is depicted by target number 6 at 11 o'clock, at a distance of 2.5 kilometers from where you all are seated today. And to witness this lethal destruction, we will witness two advanced light helicopter Mark IV, call sign Rudra, approaching from your far right side, ready to brutally destroy the enemy tank target today. These helicopters are from Indian Army Aviation Corps. The LH Mark IV is the armed variant for attack, close air support and high altitude operations aircraft. And there you can see, far right, LH Mark IV already dispensed its flare, ready to attack the enemy tank target. The destruction of enemy tank target is important as the enemy tank is a formidable embodiment of military strength and technological prowess. भारतीय वायुसेना और थल सेना की संयुक्त योजनाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सेनाएं एकजुट रूप से शक्तिशाली और कुशलता से कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकती है. And there you can see right in front of you, LH Mark IV has attacked. And the tank convoy has been pounded heavily. दुश्मन की अग्रिम श्रेणी का टैंक एलएच रुद्र के भीषण हमले से निस्तनाबूद कर दिया गया है. पेट्रोल, तेल और स्नेहक भंडार दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. इस सुविधा के नष्ट होने से दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता चरमरा जाएगी. भारतीय वायुसेना के घातक बेड़े में से मी-17 1B हेलीकॉप्टर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जो आज लक्ष्य पर 80 मिलीमीटर रॉकेट की बौछार करेगा. रंजीत फॉर्मेशन, जिसमें दो मी-17 1B हेलीकॉप्टर हैं, लक्ष्य के करीब दाहिनी ओर से पहुंच रही है, जो कि लक्ष्य संख्या 10 को निशाना बनाएगी. Ranjit formation consisting of two Mi-17 1B helicopter is approaching from your right 2 o'clock and the pilot has made the switch selections going into the attack mode. The helicopters are dispensing flares to attract your attention and there he fires. A total of 40 rockets are pounding the target. Number 2 has his sights set on the target following his leader. Number 2 is dispensing flares to attract your attention. And there he fires his 40 rockets which are pounding the target and the fuel dump is completely destroyed and set on fire.
Now, in the sequence of events, deep penetration strike aircraft Jaguar would destroy a strategic target, which is an ordnance factory of the enemy. This ordnance factory is vital to enemy's war effort and would be destroyed by dropping 1,000-pounder bombs. घटना के क्रम में अब डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक विमान जैगुआर फाइटर द्वारा एक आयुध कारखाने को विध्वंस किया जाएगा. Here comes the Jaguar with 6,000-pounder bomb from your left, 10 o'clock high, which is aiming at target in front of you. The leader rolls into the attack. And with the trigger press, the bombs are gliding towards the target. The number 2 closely following his leader, releasing his arsenal of bombs. जैगुआर विमान ने पलक झपकते ही लक्ष्य पर बमबारी कर दी है और ये भयंकर विस्फोट लक्ष्य को मिट्टी में धूमिल कर दिया गया है. Next, you'll see an indigenously developed light combat aircraft Tejas called sign Tejas. A versatile platform, it will first destroy an enemy fighter in the air, after which it will attack the enemy logistics node located at target number 12 right in front of you at a distance of 2.5 kilometers. The Tejas will strike an enemy aircraft which is being simulated by the meat, which will be picked up by the onboard radar of the Tejas aircraft. The pilot will then fire an R-73 missile, which will home onto the heat signature emitted by the drone. This is done by the infrared secret of the R-73 missile. The target aircraft will fly in from your left towards your front at a height of 1,500 feet. A live feed of the RPA is also tracking the meat and is being displayed on the screens placed in front of you. The LCA seamlessly transitions between air-to-air and air-to-ground roles, showcasing its multifacetedness. Equipped with modern avionics and weaponry, the LCA's swing roll capability enables it to effectively engage both aerial and ground target. Keep looking to your left as the Tejas flies in. They are closely tracking the enemy and dispensing flares. And fire. The missile has crossed very close to the target. In actual case, the missile with a proximity fuse would definitely destroy the target. The engines of the Tejas roars as he engages reheat and flies out of the arena. The Tejas aircraft is equipped to swiftly change its role from air-to-air into an air-to-ground role, also called a swing roll capability. After neutralizing the threat in the air, the pilot spots an opportunity target and revectors in support of the strategic aim of the commander. If you look to a right 2 o'clock at a height of 8,000 feet, the Tejas repositions for another attack on the enemy. Having demonstrated the aerial targeting capability with an air-to-air missile, it shall now seamlessly swing into air-to-ground role, wherein it will change its role from an interceptor into a strike aircraft. It shall be employing conventional bombs to hit an enemy logistics node simulated by target number 12 to your 12 o'clock at a distance of 2.5 kilometers. दर्शकों, हवा में एयर टू एयर मिसाइल से सटीकता के साथ लक्ष्य को समाप्त करने के प्रदर्शन के बाद अब तेजस विमान जमीन पर शत्रु के एक बड़े लॉजिस्टिक्स भंडार को तबाह करने का प्रदर्शन करेगा. And with that, the Tejas is in dive. Switch selection done. He's primed for the kill. Bombs have been released. Keep following the bomb, heading for a definite destruction. There the impact.
and the vital enemy war supplies have been completely destroyed. Uru formation comprising two Sukhoi 30 MKI are planned for dropping a barrage of 100 kg bombs on enemy troop concentration area, simulated by target number 3, right 1 o'clock at a distance of 2.5 kilometers. Taking coordinated operation missions deeper into enemy territory, we will now plan an attack over the enemy's troop concentration area, which is a time-sensitive target. This area is a designated location where the military forces gather and prepare for operations. आपके बाएं से आते हुए दो सुखोई 30 विमान तीव्र गति से हमले के लिए आगे बढ़ रहे हैं. Look to your left, 10 o'clock high, 2 Sukhoi 30. Bombs away. Wait for the impact. 44 bombs have been dropped by 2 Sukhoi 30. And there. विध्वंस का खौफनाक नजारा, दुश्मन पर जोरदार हमला और दुश्मन को निस्ते-नाबूद कर दिया. Next in sequence of attack is the Apache helicopter, which is one of the latest war machines in our inventory. Please look towards your right, 2 o'clock low. Try to spot these helicopters sneaking into the combat zone undetected, flying at the nape of the earth. These helicopters are dispensing flares, are now pitching up and establishing into an attack formation. They are guided by our forward air controllers. The pilots are now detecting the enemy convoy with their onboard systems. They will fire Hellfire missiles as soon as a launch solution is achieved. Get ready to witness destruction of enemy tank formation. Hold your breath. And there he fires. And boom, the missiles have shattered the tank convoy. The helicopters now pitch down and accelerate to top speeds and exit the arena. The Apaches find their way back home after destroying the target and defeating enemy missiles. Flying in next, we have two advanced light helicopter Mark IV Rudra, who would be destroying the enemy's forward area rearming and refueling point, which is depicted by target number 15. The target is located right in front of you at 2 kilometers. These two helicopters will move in towards the target from your left and right, dispensing flares to deceive the enemy missiles. They will showcase their off-board firing capabilities. रुद्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का एक सशस्त्र संस्करण है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है. And here flying in are 2 ALH Mark IV Rudra, call sign Dushant, from your right and left to destroy the forward area, rearming and refueling point of the adversary. और एक अचूक निशाना. The explosion has smashed the enemy's vital assets. दुश्मन की अग्रिम श्रेणी का रीआर्मिंग और रिफ्यूलिंग पॉइंट ALH रुद्र के भीषण हमले से नेस्तनाबूद हो गया है. The helicopters exit the arena dispensing flares. दर्शकों, आप अपने दाहिनी ओर से आते हुए 2 o'clock की दिशा से C-17 विमान को देख सकते हैं, जो कंटेनर डिलीवरी सिस्टम के 10 बंडल से 10 टन रसद सामग्री की आपूर्ति करेगा.
थोड़ी ही देर में आप हवा में रैंप खुलते हुए एवं उससे पैराशूट के द्वारा रसद सामग्री को नीचे गिरते हुए देख सकेंगे। While the aerial war rages, Indian Army troops have made deep inroads into the enemy territory and require urgent resources to retain the forward momentum. You will now witness how a C-17 aircraft, call sign Beam, is used to paradrop heavy supplies for our troops in a designated drop zone into the battle area. And on the screens placed in front of you, you can also see the rams of the C-17 have opened. The extractor parachute will soon be seen deploying, extracting the platform, and here. The main parachute has deployed, stabilizing the payload. Suspended between heaven and earth, these parachutes gently glide the lifeblood of supplies to its intended drop zone. एक्सट्रैक्टर पैराशूट की मदद से रसद सामग्री बाहर आ चुकी है। अपने सामने लगे स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं कि कैसे C-17 विमान अपने सैनिकों के लिए अत्यंत आवश्यक सामग्री को एक्सट्रैक्टर पैराशूट की मदद से ड्रॉप कर रहा है। And with that, all the supplies have landed. The ground forces, much awaiting the arrival of the much needed resources, as they witness the spectacle as the C-17 executes its mission with unwavering commitment. The drop zone would already have been sanitized by advanced elements of the Indian Army Strike Corps. And next, you'll witness a C-130J Super Hercules aircraft, call sign Bali, undertaking assault landing. Please hold your breath as the Indian Air Force C-130J tactical aircraft will fly in at just 300 feet above the ground. The C-130J is state-of-the-art multi-role tactical transport aircraft capable of undertaking covert special operations against enemy ground forces and serve troops behind enemy lines on unprepared surfaces. And on the screens placed in front of you, you can see the live feed of the C-17 coming in for carrying out an assault landing. दर्शकों, भारतीय वायुसेना के दक्ष पायलट्स न केवल अपनी वायु सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर अपनी सेनाओं और उनके साजो सामान को भी हमले के लिए पहुंचाने में काबिल हैं। Today, the C-130 will be doing an assault landing, which means the aircraft will be landing on an unpaved runway. Here comes the C-130, call sign Bali, emerging from behind the grandstand. Let us all welcome Bali with a huge round of applause. And I'm sure you all remember the Rafale aircraft, which had earlier destroyed an enemy aircraft. It has now been assigned the role of combat air patrol, wherein it is flying at a height of 2,000 feet, so that the C-130 lands without any enemy aircraft interference. The C-130 will now be carrying out a low-altitude, high-speed tactical approach. You can see the aircraft is turning right to position itself to carry out an assault landing to insert Garud commandos for securing the runway. आज का यह प्रदर्शन असॉल्ट लैंडिंग का है। इसके दौरान यह विमान हवाई पट्टी पर कम दूरी में उतरकर दुश्मन के इलाके में गरुड़ कमांडोज को दाखिल कराएगा तथा थोड़ी देर बाद पुनः असॉल्ट लैंडिंग स्ट्रिप से दूसरे छोर से कम दूरी से ही उड़ान भर लेगा। Please keep looking towards your right. The aircraft is on short finals coming in for landing on the advanced landing strip. And the aircraft has touched down. Watch as it decelerates. Engulfed in a bowl of dust as it decelerates. Look at the ram doors opening. Keep your eyes glued to the aircraft and watch out for the Garud commandos who will swiftly and steadily jump off.
Every Garud commando has his eyes scanning the vicinity for any threat around the airfield. The Garud commandos are trained for extensively for these kind of operations. The special forces spread out alongside the runway, securing it. Today, the Garuds are capturing and securing the runway for further air-landed operations, wherein a Chinook helicopter will fly in two M777 guns. प्रहार से सुरक्षा के अपने उद्देश्य वाक्य को चरितार्थ करते हुए गरुड़ कमांडोज विमान से बाहर आ चुके हैं एवं विमान को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। विमान के उड़ जाने के पश्चात दुश्मन की जमीन पर दिए गए अपने खतरनाक अभियान को भी पूरा करेंगे। भारतीय वायुसेना की है विशेष टुकड़ी स्क्वाड में काम करती है। दूर स्थित अपने लक्ष्य को कमांडो की एक छोटी टुकड़ी जिसे ये ट्रैक कहते हैं फास्ट अटैक व्हीकल की मदद से कुछ ही समय में लक्ष्य पर पहुंचकर उसे बर्बाद कर देंगे। The ramp has closed and watch as the aircraft accelerates to reach the other end of the assault strip. C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान एक विशेष विमान है जो न केवल इस प्रकार के अभियानों को करने में सक्षम है बल्कि विभिन्न मानवीय आपदा राहत एवं बचाव अभियानों में भी प्रयोग में लाया जाता है। The C-130J Super Hercules aircraft has tremendous flexibility in landing and executing not just special operations like these, but also tactical airlift capability and reach during humanitarian assistance and disaster relief, also called HADR operations. The possibilities of innovative employability of this versatile platform for a variety of operations is truly endless. देवियों एवं सज्जनों, हमारा C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान अपने विशालकाय आकार के साथ दुश्मन को मानो कह रहा हो, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी परीक्षा है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। The C-130J is now positioned for a short field takeoff. The aircraft will open full throttle and notice the short amount of distance that the aircraft will take to get airborne. और इसके साथ विमान तैयार है पुनः आसमान की बुलंदियों को चूमने के लिए। हवा से बातें करता हुआ हमारा जहाज अब हम तक यह संदेश पहुंचा रहा है, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बहुमुखी सैन्य परिवहन विमान है। यह अपनी सामरिक एयरलिफ्ट क्षमताओं, मानवीय मिशनों और विशेष संचालन समर्थन के लिए जाना जाता है। सुपर हरक्यूलिस विमान अपनी उन्नत एवियोनिक्स और लंबी दूरी के साथ भारत की एयरलिफ्ट क्षमताओं को बढ़ाता है, जो रणनीतिक गतिशीलता, सैनिकों और कार्गो की तेजी से तैनाती में योगदान देता है। C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है में शानदार असॉल्ट लैंडिंग क्षमताएं हैं, जिसका प्रदर्शन अभी आपने देखा। यह भारतीय वायुसेना को विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित डिप्लॉयमेंट और संचार सुरक्षा में मदद करने के लिए अपने परिसरबद्ध एयरस्ट्रिप से उत्कृष्ट करता है।
Next in the sequence of events is an underslung operation by Chinook helicopters, also known as external load operations. This type of flying requires extensive training and skill. This kind of operation is also very useful in disaster relief and humanitarian assistance. Now the aircraft is on your right, 2 o'clock. You will see two heavy lift tandem rotor Chinook helicopters, call sign Hanuman, carrying two M777 guns of the Indian Army as underslung load, ready to be delivered into the battlefield. The helicopters are dispensing flares. घटना के क्रम में अब शुनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक अंडरस्लंग ऑपरेशन है। बाहरी बार संचालन के रूप में प्रसिद्ध इस ऑपरेशन की उड़ान के लिए प्रशिक्षण, कौशल और जज्बे की आवश्यकता होती है। इस तरह के ऑपरेशन बहुत उपयोगी हैं और उसे मानवीय सहायता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दुर्गम क्षेत्रों में विमान से रसद वितरण को सक्षम बनाता है। The Chinook is a tandem rotor heavy lift helicopter that is in the inventory of Indian Air Force. The Chinook possesses several means of loading various cargoes, including multiple doors across the fuselage, a wide loading ramp located at the rear of the fuselage, and a total of 3 external ventral cargo hooks to carry underslung loads. शिनूक हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में हमारी तोपों का लगातार स्थान बदलने में मदद करता है, जिससे शत्रु को हमारी तोप के सही स्थान का कभी पता नहीं चलता। शिनूक हेलीकॉप्टर दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी तोप को पहुंचाकर शत्रु को अचंभित कर देता है। With its robust twin-engine power, it effortlessly shoulders hefty payloads ranging from artillery to vehicle, both internally and externally, showcasing its maximum payload capacity. Its extended range and endurance grants it the freedom to traverse vast distances and maintain prolonged airtime, enhancing operational adaptability. The aircraft's modern avionics systems, featuring cockpit displays and advanced navigational tools, amplify situational awareness and mission efficacy to unprecedented levels. Chinooks provide strategic support by airlifting heavy construction equipment to the far reaches of Himalayas and played a crucial role in sustenance of operations in one of the biggest ever helicopter humanitarian relief and evacuation efforts undertaken under Operation Rahat. The Chinook's ability to carry large underslung loads has been of significant value in relief operations in the aftermath of natural disasters. Since the type's inception, the Chinook has carried out various secondary missions, including medical evacuation, disaster relief, search and rescue, aircraft recovery, firefighting, and heavy construction assistance. In February of 2020, the Indian Air Force started using Chinooks at theaters such as Ladakh and Siachen Glacier to assist Indian forces deployed at the Indian borders with China and Pakistan. On your screens, you can see the Chinook helicopters lowering the M777 guns. The M777 howitzer is a 155 mm 39 caliber towed artillery gun and weighs just 4 tons, which makes them light enough to be airlifted underslung from Chinook helicopters. The gun, unlike traditional artillery systems, is ideal for quick transport owing to its weight. The weapon is easier to move on battlefield and quicker to set up than earlier guns. Chinook helicopters are a versatile component of airspace power. They can induct troops and equipment direct into action and extricate them on completion of tasks. Chinook helicopters are used in air-landed operations where the troops are landed near the objective, where they organize into combat units and move towards their objective. These helicopters enable rapid insertion and transfer of troops into forward locations. Advanced landing grounds and inter-valley troop transfer
are a major component of a Chinook helicopter. The Chinook helicopter has successfully offloaded the guns, displaying how we undertake airborne operation, showcasing coordination between air and land elements of the armed forces. How both elements come together and ready to destroy any enemy who even dares to look at us. On the screen's position in front, you can see the live bird's eye view of the operations undertaken jointly by the forces, which is being transmitted by the RPA. Now the Chinook helicopters have completed their mission and are moving on to the next mission. वायुसेना और थल सेना की ये संयुक्त कार्रवाई देखकर एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति कही जा सकती है। पंख उनकी जरूरत नहीं, वो लोग जज्बों से हवाओं में हैं। इश्क किया है देश की मिट्टी से, जिंदगी सुपुर्द देश की वफाओं में है। कोई जमी की पहरेदारी में जुटा है, कोई सलामत रखे है हमारा आसमां। सबका मकसद सिर्फ एक है, हर हाल में सलामत रहे हिंदुस्तान। और अब थल सेना की एक टुकड़ी गन्स को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएंगे और वहां से दुश्मन पर धड़ाधड़ गोलों की बौछार की जाएगी। हार्दिक नमन है भारतीय वायु वीरों का, धरती से ज्यादा गगन है इनको प्यारा। शत्रु देखेंगे अपने सीने पर हाथ रखकर भारत देश की वायु शक्ति का नजारा। In the next demonstration, we will give you an insight into the capability of Indian Air Force to carry out attacks by unmanned aerial vehicles called attack drones. This system will destroy the radar sight of the enemy depicted by target number 16. It is an indigenous autonomous vertical takeoff and landing capable drone. It provides real-time feedback with respect to the accuracy of the hit. This drone is ideal to take on small targets and ensures low collateral damage. Electronic intelligence has provided fresh information that an enemy is tracking our movements through its radar. And so, it has become imperative that we destroy this radar situated at target number 16, position in front of you. Look straight ahead, high, as the drone may go into dive anytime. The attack drone has already been fired and is now on the way to the target. Keep your eyes glued on the target, as the attack drone may drop onto the target anytime, catching enemy by total surprise. In the realm of modern warfare, attack drones stand as a testament to the evolution of precision strike capabilities, offering shift in the way conflicts are waged. These are sophisticated weapons, combine the attributes of traditional munitions with the strategic advantage of loitering over the battlefield for extended periods, awaiting the optimal moment to engage targets with surgical precision. Listen to the sound of the drone as it dives toward the target. एक अचूक निशाना, दुश्मन की सेना का एक महत्वपूर्ण रडार नष्ट हो गया है। We now move on to firing of guided missiles from the ground. Our surface-to-air missile systems protect our deployed forces, airfields, and other civil infrastructure. The Indian Air Force has a large arsenal of surface-to-air missiles, of which the S-400 and MRSAM are the latest inductions, which provide not only point defense but area defense as well. Today, you'll witness firing of Samar and Akash missile systems. Coming up next is the Samar, which is a new indigenously developed system. Samar, known as the surface-to-air missile for assured retaliation, is now getting ready to fire its missiles on the meat. The target will be approaching from your left,
10 o'clock at a height of 1500 feet. And on the screen space in front of you, you can see a close-up image of the summer system and its characteristics white missiles. दर्शकों, अब देखिए कि कैसे समर मिसाइल सिस्टम देश की वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले दुश्मन के लड़ाकू जहाज को रोकती है। समर का विकास भारतीय वायुसेना की बेस मरम्मत डिपो और भारतीय कंपनियों द्वारा 2022 में हुआ है। Watch 12 o'clock to you. Flying in is the meat simulating an enemy aircraft as soon as it comes into the engagement zone. The summer missile system, which is located at your right 1 o'clock, will fire a missile. The missiles have taken a lock and is closely tracking the meat. It will launch as soon as the launch solution is achieved. Keep your eyes glued towards the The missile has crossed very close to the target. In actual case, with the comparatively larger size of the enemy aircraft, the proximity fuse of the missiles would engage and will give an assured destruction of the enemy. Watch as the enemy falls to the ground, burning up in flames. जो नर्म आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। Ladies and gentlemen, we have come to the end of the part 1 of Vayu Shakti 2024. But there is more that is left to be seen still. Before we commence our further firepower demonstrations, we will take a short break and get back to you with more power and enthusiasm on the Pokhran range today. देवियों एवं सज्जनों, अब से कुछ ही देर के विराम के बाद हम सब एक बार फिर एकत्रित होंगे, जहां हम आपको आसमान पे रंग बिरंगे पैराशूट दिखाएंगे, गरुड़ कमांडोज के जाबाज करतब दिखाएंगे, वह कैसे हमारी मिसाइल सिस्टम हमारी वायु सीमा की सुरक्षा करती है, यह सब दर्शाएंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बस हमारे साथ ही थोड़ा सा इंतजार कीजिए। While we take a short break, our tri-services band consisting of 54 band members will enthrall you with their musical performance. Under the able guidance of Flight Lieutenant L.S. Rupa Chandra, Director of Music, the band will be playing melodious tunes consisting of Air Warriors Symphony Orchestra Band, Number 1 EME Band and Indian Naval Central Band. The patriotic air of Pokhran Range will be filled with tunes of Vande Mataram, Kadam Kadam Badhaye Ja, Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai, and many more. So stay tuned with us as we get back to you after a short break. Our next presentation will start at 6:40 p.m. तलवारों पे तलवार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ये मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी बहतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा कितनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा कितनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख भरी भर नम ना हो मैं मरता लड़ेगा वो नाश करेगा दुश्मन अकेला वो संगीन पे सर रखे लड़ेगा वो नाश करेगा दुश्मन अकेला वो कंगना नौसेना वायुसेना भारतीय सेना कंगना नौसेना
नौसेना भारतीय सेना पहला पानी का ठहराए वो दुश्मन को हरा के आएगा वो नीले आसमानों का रक्षक है वो विजय प्रहार करके लौटेगा वो नौसेना नौसेना वायुसेना भारतीय सेना नौसेना नौसेना वायुसेना भारतीय सेना लेकर जान भेजी पर लहरा हंसते मुस्कुराते बोले हम हैं अभी दीवार दिखाकर भारत के वीर जवान तिरंगा लेके सीने में बोले अमर हिंदुस्तान अमर हिंदुस्तान उठा के यूं चले मुसीबतों को चीरते हम सिर उठा के यूं चले मुसीबतों को चीरते हम शेर है हम विपत्तियों में काल है हम दोस्तों की जान है हम दुश्मनों के तार है हम दोस्तों की जान है हम दुश्मनों के तार है हम निश्चय कर चले हम मान देश का रखेंगे जननी का प्यार लेके त्याग उनका ना भूलेंगे निश्चय कर चले हम मान देश का रखेंगे जननी का प्यार लेके त्याग उनका ना भूलेंगे हम रोशनी शौर्य के प्रदर्शनी हर तरह की शत्रु सेना सामने है भारतीय सेना हर तरह की शत्रु सेना सामने है भारतीय सेना हर सेना नौसेना वायुसेना भारतीय सेना
चेक चेक Ladies and gentlemen, we welcome you again to the second half of Vayu Shakti 2024. I request all of you to be seated for the next demonstration. देवियों एवं सज्जनों, हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं वायु शक्ति 2024 की संध्या प्रस्तुति में। अभी तक आपने देखा कि कैसे हमारे वीर वायु योद्धाओं ने आप सबके सामने हमारी भारतीय वायुसेना की घातक विनाशकारी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं।
As the sun gets ready to make way for the moon and the dusk settles down on the dreary desert of Rajasthan today, let me draw your attention up towards the sky of Pokhran for an aerial display commencing shortly, where you will see tiny specks of colorful parachutes. These parachutes are of the parajumpers of the Akash Ganga team. The parajumpers will dance on silver wings of sun-split clouds, soaring and singing, chasing the winds and sweeping heights with grace. हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं वायु शक्ति 2024 पे। अब से कुछ ही देर में आप सबके समक्ष भारतीय वायुसेना के साहसी योद्धा आपके सामने स्काई डाइविंग करके अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। धरती माता को प्रणाम करने से पहले हमारे वायु योद्धा आप सबको हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाकर मंत्र मुग्ध कर देंगे। आज के इस प्रदर्शन में AN-32 परिवहन विमान सभी स्काई डाइवर्स को 8000 फीट की ऊंचाई पर लेकर उड़ रहा है। बस आपकी तालियों की गड़गड़ाहट अगर एक बार इनके कान तक पहुंच जाए तो वह आपसे मिलने के लिए स्वयं ही पहुंच जाएंगे। These colorful parachutes in the sky will be opened by our daring parajumpers from 8,000 feet in the sky by an AN-32 aircraft. The parajumpers will land with sheer grit, determination, skill, and experience. Today, piloting the AN-32 of Paratrooper School is Squadron Leader Aman Gupta, Flight Lieutenant Hari. Navigating them to today's drop is Flight Lieutenant Naidu. Ladies and gentlemen, look up to your right, 2 o'clock, where you can see the AN-32 ready to drop our parajumpers of the Akash Ganga skydiving team. On the ground, you can see white smoke flowing, which will be giving an indication to our parajumpers to land at that particular drop zone. There is a safety officer standing near this smoke area who ensures that all the parajumpers land safely at the drop zone. Today, this crucial responsibility has been given to Junior Warrant Officer Kushwaha and Sergeant Bhavani, who will wave at you. The AN-32 aircraft from which our parajumpers are jumping today is known as the workhorse of the Indian Air Force. This twin-engine, turboprop multi-purpose transport aircraft has been in our inventory since the early 1980s. It is a robust platform that has carried out landing at Daulat Beg Oldi, the highest advanced landing ground in the world. Located amidst the Karakoram range, AN-32 carries out regular air maintenance of forward areas in Ladakh and northeast regions, both of which have peculiar terrain and pose unique challenges. The Akash Ganga team is India's premier military parachute display team based at Paratroopers Training School, Agra. The team displays at venues both in India and abroad throughout the year. Our team boasts of the finest parachute jump instructors who are an embodiment of professionalism, discipline, and ethos of one of the largest air forces of the world. भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम जो कि आकाश गंगा नाम से विश्व प्रसिद्ध है,
आगरा में स्थित है, जहां पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में इन्हें स्काई डाइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेनिंग स्कूल में वायुसेना के पैराट्रूपर्स के साथ साथ सेना के अन्य अंगों के योद्धाओं को भी पैरा जंप की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए और इस दक्षता को हासिल करने के लिए हमारे वायु योद्धाओं ने अपने रात दिन की ट्रेनिंग में बहुत पसीना बहाया है। आकाश से रंग बिरंगे छतरियों से उतरते ये स्काई डाइविंग टीम के सदस्य अभी आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की याद दिला रहे हैं, लेकिन ये आसमान के वो स्टार हैं जिन्होंने चमकना भी सीखा और निखरना भी सीखा। While we wait for the Akash Ganga skydiving team to land in front of us at the Pokhran range today, let me acquaint you with the members of the parajumping team. The team leader today is coordinator Sailesh Upreti, who has 500 plus jumps to his credit and has jumped in all terrains of the country in various airborne exercises, including Leh in north, Car Nicobar Island in the south, Pokhran in the west. He is a qualified parajump instructor, qualified on all operational roles, including high altitude oxygen jumps. And other parajumpers performing various maneuvers in front of us today will be a parajumper landing with the Indian Air Force flag, followed by parajumpers doing free fall, and then a parajumper landing with the Akash Ganga flag. देवियों एवं सज्जनों, आप आकाश में देख सकते हैं हमारे 9 स्काई डाइवर्स मंडराते हुए अपने पैराशूट के साथ। आपसे अनुरोध है कि जब हमारे पैरा जंपर्स आपके सामने उतरे, आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करके उनका उत्साह बढ़ाएं। And what you're seeing in the screens in front of you is a 3 canopy stack formation known as trio. The skydivers must maneuver after parachute deployment to stand one on top of the other. This maneuver has very little margin for error, as we can see. Flying the saffron canopy depicting the strength and courage is Colonel Sailesh, formation leader, at top who is solely controlling the whole formation, symbolizing peace, unity and truth. Flying the white canopy is Warrant Officer R.K. Tiwari, depicting fertility, growth and auspiciousness of land. Flying the green canopy is J.W. Pavan Indora. Please give a big round of applause for the trio. And get ready to witness the first parajumper, Sergeant Yogender, ready to land with the Indian Air Force flag. The huge Indian Air Force flag depicts the motto of Indian Air Force, Nabha Spirisham Deeptam, which means touch the sky with glory. And there you can see angels descending from skies, angels whose veins are pumping with Josh and Junoon. Please give a big round of applause to Sergeant Yogender, our first parajumper, who has landed successfully.
Landing next is Sergeant Tundal, who has 300 plus jumps to his credit. Following him is Sergeant R.K. Yadav, who has flown more than 400 plus jumps. And landing with the Akash Ganga flag, Sergeant Dipinder. दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आकाश गंगा के सभी वायु योद्धा बहुत ही खतरनाक कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इन जाबाज सैनिकों को लगातार हवा के विपरीत या हवा के साथ अपनी स्थिति को अपने उतरने वाले स्थान की ओर लेकर जाना है। इसलिए गर्व से जोरदार स्वागत कीजिए आकाश गंगा टीम के इन स्काई डाइवर्स का। And look up to your right as you can see the trio ready to land. And behold these sides as they will disentangle themselves. And there, the trio has split, ready to land. Please give a big round of applause as the team leader has saluted, thanking the worthy audience today. After the spellbinding performance by the Akash Ganga team, take your eyes towards the left at 10 o'clock. You will now witness a special heliborne operation for which our special forces, the Garud commandos and helicopter pilots train extensively. Today, the Garud team will slither from a Mi-17 helicopter and break free hostages from enemy clutches who are held in a two-story building at your right, 2 o'clock. For this daunting task, our Garud commandos will slither from the helicopter and land on top of the building. Our troops will then neutralize the terrorists with explosives and rescue the hostages. Coming up on your 12 o'clock is the first Mi-17, and on your left, 9 o'clock, slightly above the horizon, is the second Mi-17. The first Mi-17 will be carrying out a searchlight operation. He'll be approaching the building for slithering operations with a searchlight on. These searchlights are used by Mi-17 helicopters for target elimination as well as for recovery of downed aircrew during combat search and rescue missions. This display shows how our Special Forces team operate in a hostile terrain and achieve a given task successfully. Today, our professional pilots and bold commandos will showcase how we thrive in enemy territory as well. The Garuds were raised in September 2003. Since their inception, they've evolved into a formidable force capable of undertaking independent operations deep behind enemy lines in support of air operations, thereby augmenting the offensive capability of the Indian Air Force. They've proved their mettle in the successful conduct of numerous counter-terrorist operations in Jammu and Kashmir Valley, humanitarian and disaster relief operations, and out-of-area contingencies, thereby bringing laurels to the organization. Look right, 1 o'clock high, the aircraft has switched on its searchlight, and the second Mi-17, loaded with Garud commandos, is now approaching the building for slithering operations.
आप सबको बताते हुए हमें बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि जिस मी-17 से हमारे गरुड़ कमांडोज आज ये ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं, यही मी-17 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन सफेद सागर में शामिल थे। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत में भी ये हेलीकॉप्टर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। 26/11 के मुंबई हमलों में ताज होटल की छत पर एनएसजी कमांडोज को स्लिदरिंग के जरिए डिप्लॉय करने में भी इनका उपयोग किया गया था। And with that, the first line is up. The first Garud Commando is slithering and has landed on top of the building. हमारे जाबाज कमांडोज अब बिल्डिंग के ऊपर एक रस्सी की मदद से उतर रहे हैं, जिनका अभी लक्ष्य है दुश्मन के चंगुल से हमारे बंधकों को छुड़ाना। कदमों से कदम मिलाते हमारे गरुड़ की यह टोली दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ मिलकर दुश्मन और संकट का समूल विनाश कर देंगे। Notice that a Garud team is not secured by any safety lines and they have to rely entirely on their training and arm strength. This unique maneuver is done after days of relentless and aggressive training by our commandos. To carry out this activity, our Garud commandos are equipped with special mittens to avoid blistering of hands. And with that, the whole team of Garud commandos is on top of the building. Observe how quietly the commandos have lowered themselves down. They'll now place charges on the building for detonating the building so as to enter the enemy hideout to continue with their mission. The charges have been placed, and next, an assault party of 4 troops of Garud Special Forces will rappel down to neutralize the unsuspecting terrorist. Reaching above the windows, they'll pause, and so shall we, and wait for the explosion. Detonating the charges, the Garuds swing into the shattered windows. The terrorists roll up inside, are caught by surprise. A huge round of applause for our Garud commandos. इस हमले से दुश्मन अचंभित और भयभीत हो चुका है। On the screens placed in front of you, you can see live bird's eye view of the Garud operations. The terrorists have been neutralized. Meanwhile, the second team of Garud commandos can be seen approaching the door in the adjacent building. You will now see the demolition expert place an explosive charge on the door. हमारे बहादुर और साहसी कमांडोज द्वारा सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया है और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा।
अपने सामने लगी स्क्रीन्स पर आप गरुड़ कमांडोज द्वारा बंधकों को बाहर निकाला जाने वाला ऑपरेशन देख सकते हैं। This event showcased remarkable urban intervention capabilities of the Garud Special Forces. Trained for counterterrorism and special operations, they excel in swift and precise action within urban environment. Employing advanced tactics, the Garud forces demonstrate expertise in close quarter combat, hostage rescue, securing strategic locations in urban settings. Their proficiency underscores the importance of specialized unit in addressing complex challenges within densely populated areas. गरुड़ कई अनिवार्य कार्यों में शत्रु क्षेत्रों में घुसकर दुश्मन की संपत्तियों को नष्ट करने एवं हवाई हमलों के परिणामों का मूल्यांकन करने में हमारा मार्गदर्शन करने के योग्य हैं। गरुड़ कमांडो का चयन एक बहुत ही कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के बाद होता है। गरुड़ प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में जंगल और बर्फ में जीवित रहने की तकनीक, विशेष हथियार संचालन एवं उन्नत गोताखोरी कौशल शामिल हैं। The Indian Air Force places emphasis on rigorous training of aircrew to operate effectively during night time. Simulation exercises such as these play a crucial role in preparing pilots for complex scenarios, ensuring they can navigate and engage targets proficiently. रात्रि उड़ान और फायरिंग ऑपरेशन वायुसेना के लिए कई रणनीतिक और सामरिक लाभ प्रदान करते हैं। रात में संचालन अंधेरे का एक प्राकृतिक आवरण प्रदान करता है, जिससे छिपने की क्षमताएं बढ़ती हैं। सरप्राइज हमले और युद्धाभ्यास अधिक प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि विरोधियों की दृश्यता और प्रतिक्रिया का समय कम हो जाता है। Overall, the Indian Air Force night operation capabilities are a result of continuous modernization efforts and investments in cutting-edge technology, enabling them to conduct operations across a wide spectrum of scenarios. The Indian Air Force employs advanced night vision devices for aircrew, enhancing their ability to operate in low light conditions. This technology allows for effective navigation, target acquisition, and overall situational awareness during night missions. The Indian Air Force utilizes precision guided munitions that can be employed with deadly accuracy even during night. वायु शक्ति अभ्यास कई हवाई अड्डों से संचालन करते हुए लंबी दूरी और दक्षता के साथ साथ पारंपरिक हथियारों को सटीकता से, समय पर और विनाशकारी प्रभाव से वितरित करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन है। The Indian Air Force possesses comprehensive capabilities for night operations, including the deployment of air-to-air missiles, surface-to-air missiles, bombs, and rockets. The integration of these capabilities into night operation strategies reflects a holistic approach to modern warfare. Advanced avionics, sensor systems, and training ensure that we can effectively execute a wide range of missions, from air-to-air combat to ground attacks under the cover of darkness. As the dusk has descended amidst relentless pounding of rockets, bombs, and guns blazing from the turrets of fighters and helicopters, you will now be introduced to night targets. The events that will follow stand testimony to capability of Air Force and its ability to destroy the enemy despite the time of the day. The introduction to the night target briefing will be done by Squadron Leader Indrani Saha. She is an operational helicopter pilot who has participated in humanitarian assistance and disaster relief operations. The night targets will be illuminated by LED lights, which will draw your attention towards the target. जय हिंद श्रीमान, मैं स्क्वाड्रन लीडर इंद्रानी साहा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ वायु शक्ति 2024 के नाइट पावर डेमोन्स्ट्रेशन में। आज हमारे वीर वायु योद्धा आपके समक्ष एक बार फिर अपनी हवाई क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त करके दिखाएंगे। घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं आप सबका परिचय नाइट टारगेट से करवाना चाहूंगी। मैं अपनी ब्रीफिंग में आपको बाएं से दाहिने ले जाते हुए टारगेट एरिया का परिचय करवाऊंगी। हमारे टारगेट्स आपके ग्रैंड स्टैंड से 11 o'clock से लेके 1 o'clock पर
2 से 3 किलोमीटर तक की दूरी पर फैले हुए हैं। हमारा पहला टारगेट आपके 11 o'clock पर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दुश्मन के फॉरवर्ड एरिया रीआर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग पॉइंट को दर्शाता है। इस टारगेट को नष्ट करने हमारे स्वदेशी प्रचंड यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आएंगे। हमारा दूसरा टारगेट आपसे 12:30 पर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दुश्मन के थर्मल पावर स्टेशन को दर्शाता है। इस टारगेट को नष्ट करने हमारे लड़ाकू विमान जैगुआर आएंगे। हमारा तीसरा टारगेट आपसे 1 o'clock पर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दुश्मन के क्रिटिकल डिफेंस इंडस्ट्री को दर्शाता है। इस टारगेट को नष्ट करने हमारे एयर सुपीरियोरिटी फाइटर सुखोई 30 आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश को फायर करते हुए, जिसके 4 लॉन्चर्स हमने आपसे ठीक 12 o'clock पर 500 मीटर की दूरी पर लगाए हैं। इन 4 लॉन्चर्स की आपसी दूरी 50 से 70 मीटर है। और कुछ देर पहले जो आपने थल सेना के M777 होविट्जर को अंडरस्लंग होते हुए देखा, वह अब एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप के बाईं ओर रीपोजिशन कर दी गई है और फायरिंग के लिए तैयार है। जय हिंद श्रीमान, मेरी नाइट ब्रीफिंग समाप्त हुई। After that night target briefing on ground, let me draw your attention once again at the sky, where shortly we will see the mighty C-130J Super Hercules aircraft, call sign Prakash, approaching from your 12 o'clock and flying overhead you, dispensing flares. Flares are used by military aircraft to receive heat-seeking missiles. C-130J Super Hercules is a 4-engine turboprop military transport aircraft. Equipped with an infrared detection set, the aircraft can perform precision low-level flying airdrop and landing in blackout conditions. Please look straight ahead. Very soon you will see the C-130J switching on and off its landing lights to draw your attention. Super Hercules transport aircraft recently conducted a rescue operation overseas, where it landed on an airstrip which was in a degraded condition, with no navigational approach, aids, or fuel. Flying into unprepared runway into darkness to rescue 121 personnel from a small airstrip showcased what this aircraft is capable of, even in unknown territory. This requires excellent landing skills and precision. Please look straight ahead as you will be able to witness the landing lights of the C-130J Super Hercules. For the first time, C-130J carried out night landing at Kargil airstrip, located at an altitude of 10,000 feet. This airstrip is a restricted airspace with unidirectional approach surrounded by rough terrain. And there, lo, behold what a sight, C-130J dispensing its flares. Please give a big round of applause to the C-130J Super Hercules. And listen to the thunderous engines. Next is the Akash, surface-to-air missile demonstrating its firing capabilities. The missile is located in front of the grandstand. This surface-to-air missile is one of the latest indigenous acquisition by the Indian Air Force. Developed by Defense Research and Development Organization, this system is capable of simultaneously tracking 64 targets and engaging 4 targets. देवियों और सज्जनों, अब हम भारतीय वायुसेना की सतह से हवा में निर्देशित हथियार प्रणाली आकाश के नवीनतम स्वदेशी संस्करण का प्रदर्शन करेंगे, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये प्रणाली सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले हेलीकॉप्टरों एवं अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे 64 लक्ष्यों का एक साथ पता लगाने में सक्षम है और आपके सामने तैनात है। Very soon you will be able to witness an aerial drone
called as Meet, which will be simulating enemy aircraft. The variant of Meet that is being used today is Jet 40 Plus, which is also called as Shikra. Meet has been launched multiple times during the course of this event and has been utilized as an aerial target for air-to-air and surface-to-air missiles. महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और दुश्मन के विमानों पर हमला करने के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम को सक्रिय करने का फैसला लिया गया है. To ensure the security of vital areas and points and to strike the enemy aircraft, Akash missile system is used. Please look straight ahead as the two drones, also called as Meet, are crossing in front of you. Now keep your eyes glued towards the front as the Akash missile system would spring into action as soon as the launch parameters are achieved. आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल फ्लाइट कंट्रोल सेंटर प्रणाली द्वारा the missile has passed very close to the target. In actual case, the comparatively larger size of the enemy aircraft would activate the proximity fuse of the missile and the target would be destroyed. Please look towards the assault landing strip in front of you. Two M777 howitzer guns are deployed on the left edge of this landing strip. We shall soon witness the live firing by M777 guns taking on the targets in the enemy territory. This mission is also another example of our jointmanship with the Indian Army, wherein M777 artillery guns, which were dropped by two Chinook helicopters in an underslung operation a few minutes ago, will fire multiple rounds. This howitzer will be operated from the assault landing strip that has just been secured by our Garud commandos. The M777 howitzer is a towed 155mm artillery gun. Operated by a crew of 8 troops, the gun fires precision and non-precision munitions. अगला प्रदर्शन M777 हॉवित्जर द्वारा फायरिंग का है, जो असॉल्ट लैंडिंग स्ट्रिप के बाईं ओर तैनात है. 8 सैनिकों के दल से संचालित 155 मिलीमीटर कैलिबर की यह तोप विभिन्न लक्ष्यों पर सटीकता से मार कर सकती है. लगभग 4700 किलो की यह तोप भारतीय थल सेना के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ तोपों में से एक है. इसकी मारक क्षमता तकरीबन 30 किलोमीटर तक है. कृपया अपनी आंखें अब गन्स पर केंद्रित रखें. अभी आप देखेंगे कि कैसे M777 अपने लक्ष्यों पर निशाना साधती है. The guns will be firing anytime soon, and here it fires. M777 howitzer ने गोले दागना शुरू कर दिया गया है. On the screens in front of you can see the M777 guns in action being captured by our RPA. It's not just a blast, it's the eloquence of military strategy unfolding on the battlefield.
On the screens, you can see those guns in action. इस तोप द्वारा दागा गया हर गोला इस बात का प्रतीक है कि जब जब भारत की धरती पर किसी भी शत्रु का प्रवेश होगा, उनका स्वागत इसी प्रकार किया जाएगा। Now, for the first time ever, after its induction in the Indian Air Force, we shall be witnessing an operation by our indigenously designed and developed light combat helicopter Prachand, a shining symbol of Atmanirbharta in the field of defense production. You can hear the rotors of approaching Prachand. Tonight, Prachand, coming from your right, has been tasked to engage an enemy forward area rearming and refueling point, which is located at left 11 o'clock. The Prachand, with its advanced navigation attack system, is fully capable of undertaking this complex role. Please look to your right. You will be able to spot the approaching Prachand with its nav light. The Prachand is getting in position to engage target number 1, which is simulated as enemy far. Be ready for the action. The Prachand unleashes its fury with 24 rockets on the target. Like the Indian Air Force, Prachand never misses its target. And now a decision has been taken to attack depth targets in the enemy hinterland. A deep penetration strike aircraft Jaguar, call sign Chakra, shall attack a power station and its associated electricity distribution infrastructure. This is being simulated by target number 2, which is lit and is located slightly right of the grandstand at a distance of 3 kilometers. The Jaguars shall be carrying 3 1,000-pound bombs with retarder tail unit. As the war progresses and the decision is taken to take on strategic targeting, Indian Air Force fighter aircraft, accompanied by a large support package, would engage depth targets such as enemy defense industries, its electricity and power generation capability, ports, and other military installations. For today's demonstration, this will be undertaken by night by Jaguar and Su-30 aircraft. Look out for the nav lights of the Jaguars approaching from your right, flying low to avoid the enemy, and dispensing flares. The second set of flares and bombs have been released. The bombs descend toward the target, speed retarded due to the parachute, and the explosions. And with that, the enemy thermal power station is now up in flames. सारे टारगेट खत्म हो गए क्या? No, I think we still are left with something. So that means we haven't destroyed all the targets. अभी भी कुछ बाकी है. But it is not easy to spot something in this pitch black night at Pokhran range. You are absolutely right. I think the wonderful audience that we have today would help us in spotting the target. I think you're right. We should take some help from our graceful audience today. So, please look to your left and right and help us in spotting any targets which are left. कुछ दिखा? I am not able to spot anything so far. Target तो नहीं दिख रहा है. But I think I can hear something. Oh yes, and I can see something.
And this, ladies and gentlemen, was grand finale of Vayu Shakti 2024, where you witnessed 22 100 kg bombs being dropped on the target. And this is how Indian Air Force will always strike on its target, with an element of stealth, surprise, and lethality. As the thunder sound of the bomb fades into the night sky, its sound leaves an indelible mark, symbolizing the symphony of precision and power as displayed today. The sky may clear, but the echoes of this demonstration will resonate in the minds of spectators. A reminder of the capability, training status, and commitment of our air warriors. जो शक्ति प्रदर्शन आज आपने देखा वह उन युद्ध अभियानों को दर्शाता है जिसके लिए भारतीय वायुसेना प्रतिदिन तैयारी करती है। हमारे वीरों ने अपने साहस का परिचय देते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना अपने शौर्य और पराक्रम से अपने आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम की तरह सदैव इस यशस्वी अंबर में दैदीप्यमान रहेगी। We thank each one of you for having taken time off your respective schedules to be a part of this demonstration. We also thank all the viewers of Doordarshan in India and abroad who have been connected with us for the duration of this event. We hope you've enjoyed witnessing this display as much as we have enjoyed presenting it to you. अब आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि अब हम मुख्य अतिथि को एक भेंट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात राष्ट्रगान होगा। Ladies and gentlemen, do you remember the formation of two Jaguars, which took images of grandstand at the beginning of the exercise? Those images are now available at the grandstand. I now request Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal B.R. Chaudhary, to hand over that aerial image of the grandstand to Chief of the Defence Staff, General Anil Chauhan. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। May I request you all to please be seated while our chief guest leaves the venue. आप सबसे अनुरोध है कि मुख्य अतिथि के प्रस्थान तक अपने स्थान पर टीम जो कि आकाश गंगा नाम से विश्व प्रसिद्ध है, आगरा में स्थित है, जहां पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में इन्हें स्काई डाइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेनिंग स्कूल में वायुसेना के पैराट्रूपर्स के साथ साथ सेना के अन्य अंगों के योद्धाओं को भी पैरा जंप की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए और इस दक्षता को हासिल करने के लिए हमारे वायु योद्धाओं ने अपने रात दिन की ट्रेनिंग में बहुत पसीना बहाया है। आकाश से रंग बिरंगे छतरियों से उतरते ये स्काई डाइविंग टीम के सदस्य
अभी आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की याद दिला रहे हैं, लेकिन ये आसमान के वो स्टार हैं जिन्होंने चमकना भी सीखा और निखरना भी सीखा। While we wait for the Akash Ganga skydiving team to land in front of us at the Pokhran range today, let me acquaint you with the members of the parajumping team. The team leader today is coordinator Sailesh Upreti, who has 500 plus jumps to his credit and has jumped in all terrains of the country in various airborne exercises, including Leh in north, Car Nicobar Island in the south, Pokhran in the west. He is a qualified parajump instructor, qualified on all operational roles, including high altitude oxygen jumps. And other parajumpers performing various maneuvers in front of us today will be a parajumper landing with the Indian Air Force flag, followed by parajumpers doing free fall, and then a parajumper landing with the Akash Ganga flag. देवियों एवं सज्जनों, आप आकाश में देख सकते हैं हमारे 9 स्काई डाइवर्स मंडराते हुए अपने पैराशूट के साथ। आपसे अनुरोध है कि जब हमारे पैराजंपर्स आपके सामने उतरे, आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करके उनका उत्साह बढ़ाएं। And what you're seeing in the screens in front of you is a 3 canopy stack formation known as trio. The skydivers must maneuver after parachute deployment to stand one on top of the other. This maneuver has very little margin for error, as we can see. Flying the saffron canopy depicting the strength and courage is Colonel Sailesh, formation leader, at top who is solely controlling the whole formation, symbolizing peace, unity and truth. Flying the white canopy is Warrant Officer R.K. Tiwari, depicting fertility, growth and auspiciousness of land. Flying the green canopy is J.W. Pavan Indora. Please give a big round of applause for the trio. And get ready to witness the first parajumper, Sergeant Yogender, ready to land with the Indian Air Force flag. The huge Indian Air Force flag depicts the motto of Indian Air Force, Nabha Spirisham Deeptam, which means touch the sky with glory. And there you can see angels descending from skies, angels whose veins are pumping with Josh and Junoon. Please give a big round of applause to Sergeant Yogender, our first parajumper, who has landed successfully. Landing next is Sergeant Tundal, who has 300 plus jumps to his credit. Following him is Sergeant R.K. Yadav, who has flown more than 400 plus jumps. And landing with the Akash Ganga flag, Sergeant Dipinder. दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आकाश गंगा के सभी वायुयोद्धा बहुत ही खतरनाक कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं।
इन जाबाज सैनिकों को लगातार हवा के विपरीत या हवा के साथ अपनी स्थिति को अपने उतरने वाले स्थान की ओर लेकर जाना है। इसलिए गर्व से जोरदार स्वागत कीजिए आकाश गंगा टीम के इन स्काई डाइवर्स का। And look up to your right as you can see the trio ready to land. And behold these sides as they will disentangle themselves. And there, the trio has split, ready to land. Please give a big round of applause as the team leader has saluted, thanking the worthy audience today. After the spellbinding performance by the Akash Ganga team, take your eyes towards your left at 10 o'clock. You will now witness a special heliborne operation for which our special forces, the Garud commandos and helicopter pilots train extensively. Today, the Garud team will slither from a Mi-17 helicopter and break free hostages from enemy clutches who are held in a two-story building at your right, 2 o'clock. For this daunting task, our Garud commandos will slither from the helicopter and land on top of the building. Our troops will then neutralize the terrorists with explosives and rescue the hostages. Coming up on your 12 o'clock is the first Mi-17, and on your left, 9 o'clock, slightly above the horizon, is the second Mi-17. The first Mi-17 will be carrying out a searchlight operation. He'll be approaching the building for slithering operations with a searchlight on. These searchlights are used by Mi-17 helicopters for target elimination as well as for recovery of downed aircrew during combat search and rescue missions. This display shows how our Special Forces team operate in a hostile terrain and achieve a given task successfully. Today, our professional pilots and bold commandos will showcase how we thrive in enemy territory as well. The Garuds were raised in September 2003. Since their inception, they've evolved into a formidable force capable of undertaking independent operations deep behind enemy lines in support of air operations, thereby augmenting the offensive capability of the Indian Air Force. They proved their mettle in the successful conduct of numerous counter-terrorist operations in Jammu and Kashmir Valley, humanitarian and disaster relief operations, and out-of-area contingencies, thereby bringing laurels to the organization. Look right, 1 o'clock high, the aircraft has switched on its searchlight, and the second Mi-17, loaded with Garud commandos, is now approaching the building for slithering operations. आप सबको बताते हुए हमें बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि जिस Mi-17 से हमारे गरुड़ कमांडोज आज ये ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं, यही Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन सफेद सागर में शामिल थे। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत में भी ये हेलीकॉप्टर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। 26/11 के मुंबई हमलों में ताज होटल की छत पर एनएसजी कमांडोज को स्लिदरिंग के जरिए डिप्लॉय करने में भी इनका उपयोग किया गया था।
And with that, the first line is up. The first Garud commando is withering and has landed on top of the building. हमारे जाबाज कमांडोज अब बिल्डिंग के ऊपर एक रस्सी की मदद से उतर रहे हैं, जिनका अभी लक्ष्य है दुश्मन के चंगुल से हमारे बंधकों को छुड़ाना। कदमों से कदम मिलाते हमारे गरुड़ की यह टोली दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ मिलकर दुश्मन और संकट का समूल विनाश कर देंगे। Notice that a Garud team is not secured by any safety lines and they have to rely entirely on the training and arm strength. This unique maneuver is done after days of relentless and aggressive training by our commandos. To carry out this activity, our Garud commandos are equipped with special mittens to avoid blistering of hands. And with that, the whole team of Garud commandos is on top of the building. Observe how quietly the commandos have lowered themselves down. They'll now place charges on the building for detonating the building so as to enter the enemy hideout to continue with their mission. The charges have been placed, and next, an assault party of 4 troops of Garud Special Forces will rappel down to neutralize the unsuspecting terrorist. Reaching above the windows, they'll pause, and so shall we, and wait for the explosion. Detonating the charges, the Garud swing into the shattered windows. The terrorists roll up inside are caught by surprise. A huge round of applause for our Garud commandos. इस हमले से दुश्मन अचंभित और भयभीत हो चुका है। On the screens placed in front of you, you can see live bird's eye view of the Garud operations. The terrorists have been neutralized. Meanwhile, the second team of Garud commandos can be seen approaching the door in the adjacent building. You will now see the demolition expert place an explosive charge on the door.